So student, today's experiment, emitter followed as a buffer, which is nothing but the CC amplifier, right? CC amplifier. So emitter follower or CC amplifier, right? Common collector amplifier. Okay, anyways. Okay, so let me tell you what are the changes with respect to CE amplifier. Right? What are the changes with respect to CE amplifier? So let me show you the circuit of CE amplifier first, which is nothing but the experiment 6. So experiment 6, right? Experiment 7, and this one is the experiment 6. Okay. So how to convert the common emitter amplifier circuit into common collector circuit, right? So for that, let me show you first CE amplifier circuit. So for that, let me take this circuit, which is nothing but CE amplifier, correct? So what changes we have to make to convert this CE amplifier circuit into CC amplifier circuit, right? So first thing is what? Okay, we have to do a few changes. So very first thing is nothing but okay, remove the RC, correct? So very first thing, okay, you just remove the RC. So you just make this short circuit, right? Okay, you just remove the resistor, okay, from this collector branch. So you just remove the RC and make it short circuit, right? So what changes are required? Okay, you have to do few changes into the CE amplifier circuit. So very first change is nothing but the remove the RC, right? Remove the collector resistor. Okay, so your circuit likes like that one, right? So here you can see that student, now your collector terminal is directly connected to the battery. Okay, so this is your base terminal. Let me say this is your base terminal. Now this is your emitter terminal. Let me say this is your emitter terminal. Okay, and this is your collector terminal. Let me say this is your collector terminal. Okay, so if you remove the RC, so you can see that your collector terminal is directly connected to the battery VCC, correct? Your collector terminal directly connected to the battery. Okay, so that is very first change. What is the second change? So change number 2 is what? You just take output from the emitter terminal, right? Okay, so take output from emitter terminal, correct, student? From emitter terminal, correct? Emitter terminal, right? Okay, from the emitter terminal. Okay, student. So then okay, next change. Okay, so what you do is you this output, okay, you cancel over here, right? You cancel over here. Don't take output from the collector terminal. Okay, take it from the emitter terminal. Fine, student. So here, okay, you just take the output from emitter terminal. So what happens, student? This bypass capacitor, right? Okay, so you have to remove this bypass capacitor. So this bypass capacitor you remove and give it a name and make it as a coupling capacitor, right? So C2 will be there, okay, C2 will be there, right? Okay, but you just name it as a coupling capacitor, okay, and take the output from here. So don't take the output from the collector terminal, you just take the output from the emitter terminal, correct? So this is emitter terminal, okay, so you just take the output from there. So you have to remove the bypass capacitor and that becomes the coupling capacitor, correct? So that is another change, that take the output from the emitter terminal. So your bypass capacitor becomes coupling capacitor, correct? Okay, remove the bypass capacitor and insert coupling capacitor in the output. Okay, so very
Next change is what? Just remove the bypass capacitor across RE. Okay. So remove bypass capacitor. Okay, remove bypass capacitor across RE. Right. Fine. Student. So you just remove the bypass capacitor across RE. So if you make these changes, okay, if you make these changes, okay, these three changes into the CE amplifier circuit, so your amplifier becomes CC amplifier, right? Your amplifier becomes CC amplifier, common collector amplifier. Okay, so let's have a look at the CC amplifier circuit, right? So let's have a look. So here you can see that, student. Let me jump to the experiment number 9, which is a CC amplifier, emitter follower. So now let me show you the circuit. So student, this is the circuit. This one is the circuit, right? Look, this one is the circuit, student. Look, this one is the circuit, right? So if I draw the circuit over here, okay. So student, you just note that three changes, right? So what was the change number 1? Change number 1 is we have to remove the RC. So here you can see that RC is removed, right? Okay, that is nothing but the chain number 1. Okay, RC is removed. What is chain number 2? You just take the output from the emitter terminal. Got it, student? So this is your base terminal, right? This is your collector terminal, right? This is your terminal and this is your emitter terminal, correct? So you can see this. Okay, student. So you can see this, student. This is a emitter terminal, right? So we are second change is what we are taking the output from the emitter terminal instead of collector terminal, and another one is what we are okay. We have removed the bypass capacitor. Correct. We have removed the bypass capacitor and connect this as a coupling capacitor. So these three changes are there. Okay, these three changes are there in the CE amplifier circuit, and if you make these three changes, your transistor becomes CC. That is nothing but the common collector amplifier. Correct, student? CC amplifier, common collector transistor configuration. Okay, student? So these are the minor changes you have to do. Okay, but what is the advantage, student? Why do we do this? Okay, so we have to go through two things, right? Voltage gain and current gain of the CC amplifier circuit. But before that, are you there, student? These three changes we have made in the CE amplifier circuit. Okay, remove the RC, take the output from emitter terminal, and remove the bypass capacitor across RE. So your circuit becomes CC amplifier circuit, right? Okay, your circuit becomes CC amplifier circuit, common collector circuit. Okay, so are you there up to these three changes? Student? Yes, sir. ओके ओके हाँ, तीन छोटे से चेंजेस किए तो वो बन गया common collector circuit. Now why common collector circuit? So here you can see that this one collector is directly connected to ground. Student, look, this collector terminal is directly okay. If you imagine the AC circuit, right? Okay, so for AC circuit, okay, if you do the AC analysis, right? So in case of AC analysis, AC analysis, anyways, चलिए कोई बात नहीं. Fine. In case of AC analysis, right? What happened? Your battery becomes ground, right? Okay, your battery becomes ground. You have to ground your battery, right? Okay, so just ground your battery, right? Ground the battery. Okay, ground the battery. Right. So you have to ground this VCC. Okay. In case of AC analysis, you have to ground the battery. Correct. So you can see that, student, your collector terminal is connected to ground. Your collector terminal is connected to ground. That's it, student. Your collector terminal is connected at ground. So you can say that your collector is at AC ground. What? Your collector terminal. Okay. This collector terminal. Okay. In AC analysis, collector terminal is at AC ground, right? Collector terminal, okay, collector terminal, okay,
is at AC ground, right? AC ground, right? Your collector terminal is at AC ground, correct, student? Huh? So what happens, student? Where will you apply your input? So you will apply your input at base and ground, right? So you apply your input at base and ground. So your input will be applied between base. This is base terminal, right, student? This is base terminal, and this is your ground terminal, right? Okay, fine. So this whole line is your ground line, right? This entire line is nothing but your ground line. Okay, student. So you are applying your input between a base, okay, and ground. Okay, base and ground. Correct. Where do you get the output, student? You get the output from the emitter terminal, right? This is emitter terminal, correct? So you get the output from emitter terminal and ground, right? So that is your output, student. That is your output. So you get the output from emitter terminal and ground, right? Okay, emitter terminal and ground, right? Okay, so that is your output. Now, so if you see, student, if you see there, right? So here you can see that, student. Look, okay, your input is between base and ground, output emitter and ground. But interesting thing is what your collector is at AC ground. Okay, आपका collector है वो खुद ही ground है. Okay, so you can assume like that कि आप लोग input कहाँ दे रहे हो? Base and collector के बीच में. Okay, and you are taking output from where? Emitter and collector के बीच में. Why collector? Because collector ground है ना? Collector ground है. So that's why you can say that, okay, that's why you can say that कि आप जो है, okay, आपकी circuit जो है, okay, whatever CC amplifier, okay, so you are applying the input between base and collector terminal, right? So you are applying the input between base and collector terminal, and you are taking the output from emitter and collector terminal, correct? You are taking the output from emitter and collector terminal, so that is nothing but your output, student. Okay, your output between emitter and ground. Right. So this is collector is nothing but actually ground terminal, right? Collector is grounded. Collector is nothing but the grounded. Okay. So here you can see that, student, collector is common between input and output. Okay. Fine. So here you can see that. Okay. Collector is common. Look, this is collector. This is collector. Right. So that is common. Right. Okay. This is common. Okay, collector is common between input and output, so that's why it is called CC configuration, right? Common collector. Why? Because your collector is at a ground terminal. Okay, so that's why this is called common collector configuration, correct? Due to collector is at AC ground. चलिए, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, student? There. There, student. Common collector. Why common collector? Because collector is common between input and output. That's why it is called common collector, right? So now let us take a look at another two parameters, student. Great. Rohan, Chintan. Okay, Yasraj, Vikas, Damin. Okay, great. Student, okay. Now the thing is what, student? Let us focus on two quantity, right? Let us focus on the two quantity. Which are that quantities? So that is nothing but the voltage gain, student. That is nothing but the voltage gain and current gain. Okay. So let's go through it, student. Voltage gain and current gain. Okay. This circuit. So here, student. What is the equation of voltage gain of the CC amplifier? So equation of the voltage gain of CC amplifier is nothing but the small Re upon small Re plus Re dash, right? Small R is nothing but the capital Re parallel with RL. Correct. So look, small R is nothing but the parallel combination of this Re and RL. That is output side. Okay. So if I look at the gain, voltage gain, student, voltage gain of the CC amplifier circuit. Correct. So number one, okay, voltage gain of CC amplifier. Voltage gain of a CC amplifier. Okay, CC amplifier. Right, voltage gain of the CC amplifier, right? So if you go through the theoretical equation, okay, so voltage gain of CC amplifier is nothing but the small Re, okay, let me say, okay, small Re upon, okay, Re dash, right? Small Re upon Re dash, okay, Re plus Re dash, that's it, right?
Okay, where small r is nothing but the capital RE, okay, parallel with RL, right? Capital RE parallel with RL. So if you go through the circuit, student, if you go through the circuit, so that capital RE and RL will be kilo ohm, right? Look, student, your RE, what is RE? 1 kilo ohm. Okay, RL is 2.2 kilo ohm, right? So RE is 1 kilo ohm, RL is 2.2 kilo ohm, correct? So 1 kilo ohm parallel with 2.2 kilo ohm. So obviously it will be less than 1 kilo ohm. तिथि ओके, क्या बात है इतना लेट? ओके यस स्टूडेंट, आप भूल गए थे 41 तिथि. You have joined the laboratory very late. Anyways, pay attention. Okay, fine. Okay, student, please focus, right? So RE and RL will be in kilo ohm, so parallel combination will be in the kilo ohm, right? Parallel combination will be in the kilo ohm. Now, if you look at the small RE dash, student, if you look at the small RE dash, so here you can see that this is small RE dash, right? This small RE dash will be in ohm, right? Few ohms, very few ohm. Let me say less than 100 ohm, right? So very few ohms, right? Okay, so what happens, student? You can say that RE dash is very much less than, okay, RE, right? Okay, where what is RE? RE is this much, right? Okay, this is RE. Okay, this is what your RE. Okay, so this is your few ohm and this is in kilo ohm, right? Or ohms, hundreds of ohms, right? So the thing is, what you can neglect this RE dash, right? Okay, RE dash you can neglect, right? Because it is very small quantity, student. It is very small quantity, right? Yeah. So compared to RE, so what you can write is your gain is nothing but approximately equal to RE dash, right? Okay, not RE dash, RE upon RE. That's it, student. You just neglect this one. You just neglect this one. Why? Because of this condition. Let me say this is the condition. Okay, so due to this condition, neglect RE dash. Okay, neglect RE dash. Okay, neglect RE dash, which is very small quantity, right? So RE upon RE. So you can say that RE upon RE is nothing but 1, right? So your AV is approximately equal to 1. That's it. Very important result, right? So call it as equation number 1. Correct, student? So the thing is, what the voltage gain of the CC amplifier is 1. Student, voltage gain of the CC amplifier is nearly equal to 1. What does it mean, student? Voltage gain equals 1. Voltage gain is equal to 1 of the CC amplifier circuit, right? CC amplifier circuit voltage gain equal to 1. What does it mean, student? So that means, okay, that means if you apply, let me say 50 millivolt peak to peak, right? Okay, student, if you apply 50 millivolt peak to peak input signal, you just gave it to CC amplifier circuit, right? This is what? CC amplifier circuit, correct? So how much you will get? How much you will get? Your gain is what, student? Your gain is what? Gain of the CC amplifier. Nearly equal to 1. So near equal to 1, how much output you will get? Can anybody predict how much output you will get? This much to apply. 50 millivolt peak to peak you are applying. Right? 50 millivolt peak to peak you are applying. This is your input. This is your input. Okay, how much output you will get? Can anybody predict? Just look at this equation. Equation number 1. 50 milliwatt. Exactly, student. Output will be same as 50 millivolt peak to peak, student. Great. Look, output is also 50 millivolt. Very easy answer. Why? Because voltage gain is what, student? What is this AV? AV is nothing but the voltage gain, right? AV is nothing but the bolo student. सर ऊपर इक्वेशन में सर RE dash upon RE नहीं आए. Oh, where student? Equation, student. ये this one. yes sir, RE dash upon RE नहीं आए सर. RE dash upon RE. No,
No, I think no. Look, that equation is what? Look, student. Look, just a second. Look, this is what? Look, है ना ये देखो AV voltage gain is what? This is what? RE. No, because you are taking output from what? Okay, हम output कहाँ से ले रहे हैं student? हाँ, from where we are taking the output? We are taking the output from the emitter terminal. समझो student ये देखो हाँ ओके हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं emitter terminal से है ना V out कहाँ से emitter terminal से है ना तो आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा आएगा RE पैरेलल विथ RL ओके सर nothing but the voltage across RE और RL का पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी योर आउटपुट वोल्टेज है ना सो आउटपुट में रेजिस्टेंस कौन सा आएगा RE small RE that is capital RE parallel capital RL that is small RE that is your output resistance okay और इनपुट में कौन सा आएगा RE dash एमीटर डायनामिक रेजिस्टेंस ऑन RE दोनों सीरीज में आएंगे ओके right so we are taking output from the emitter terminal that's why a small RE will be there in the output side right so this is nothing but the resistance in the output right this is nothing but the resistance in the output okay this is output side okay and this much is the resistance at the input side student so that's why RE parallel RL is nothing but your output resistance right this is your output resistance right okay and this is your input resistance okay RE parallel RL okay RE plus small RE dynamic resistance okay so this is your input side correct student okay so that's why capital RE will be sorry this RE will be there not RE dash okay and this is very less quantity okay RE dash is very small compared to RE so you have to neglect this one so that's why we are neglecting this one and gain become RE upon RE which is nothing but the one हो जा रहा है student यस सर okay चलो so let me write it down okay so this is the equation right so the thing is student voltage gain is 1 तो CC एम्पलीफायर का काम क्या है ओके जितना आप इनपुट में दोगे ओके उतना ही आपको आउटपुट में मिलेगा स्टूडेंट ओके इनपुट में मान लो 50 मिली और पिक टू पिक दे रहे हो आउटपुट में भी 50 मिली और पिक टू पिक मिलेगा इनपुट में 1 वोल्ट पिक टू पिक दे रहे हो आउटपुट में भी 1 वोल्ट पिक टू पिक मिलेगा ओके इनपुट में अगर 20 मिली वोल्ट पिक टू पिक दे रहे हो आउटपुट में भी 20 मिली वोल्ट मिलेगा राइट सो आउटपुट विल बिकम्स same as input right so in CC amplifier okay in a CC amplifier right output voltage will be same as input voltage right so in a CC amplifier okay output voltage okay voltage is same as input voltage that's it right output voltage and input voltage are same in the CC amplifier circuit student so don't you think that is it useful or useless tell me जितना input उतना output में आएगा है ना output is same as student output voltage is same as input voltage output में कितना आएगा जितना input में दोगे तो is it useful or useless अंकुश क्या कर रहे हो अंकुश we want to amplify yes अंकुश correct अंकुश दूसरे लोगों को पता चला मैं क्या कह रहा हूँ वोल्टेज गेन 1 है व्हाट डज इट मीन जितना आप इनपुट में दोगे उतना आउटपुट में मिलेगा है ना बिकॉज है ना we know that student look we know what okay that voltage gain is nothing but the V output okay upon V input right okay so what is V output so V output okay this term will be over here so V output is nothing but the AV times V in right AV times V in but if now this is 1 okay gain is 1 and approximately equal to 1 in the
a CC amplifier, right? Okay, gain is 1 for the CC amplifier. Okay, so what does it mean, student? Your V out is nothing but equal to 1 times V in, or V in, है ना, 1 times V in. So that is nothing but V out equal to V in, है ना, जितना इनपुट में दोगे उतना आउटपुट में मिलेगा, तो that is useless ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना. So the thing is what, it is not amplifying voltage signal. What? CC amplifier, okay, not amplifying, right, voltage signal. Okay, not amplifying voltage signal, right? Okay, it is not amplifying voltage signal. So what it does, student? What it does? So आपको लगेगा कि अरे ये तो useless है. Yeah, this is useless, right? So what to do? What to do? क्या करे student? Let us see. Okay, so let's have a look at the current gain. Okay, अभी हमने किसके बारे में देखा student? Voltage gain, है ना? पहली quantity कौन सी थी student? Voltage gain. This is our first quantity. Voltage gain. So now have a look at the current gain. Current gain. Okay, what is the current gain of the CC amplifier? So let's have a look at the second quantity. Right. Okay. So what is second quantity? So second quantity is nothing but the current gain. Right. Okay. Current gain. Right. Current gain of a CC amplifier. Right. Right. Okay. So current gain of the CC amplifier. So what is the current gain of the CC amplifier? Output current upon input current. Right. So current gain is nothing but the output. Output we are taking from ammeter. Right. So output current upon input current. So output current is ammeter current, right? And input current is nothing but the base current, right? But we know that ammeter current is summation of collector current in base current. So this is nothing but the collector current plus base current, okay, divided by base current, okay. So if you distribute it, so this becomes what? IC upon IB, okay, and n plus 1, and IB got cancelled. Right, so but IC upon IB is nothing but your beta DC, na? IC upon IB, you know that, right? So IC upon IB is nothing but your beta DC, right? Your beta DC plus 1, right? Okay, and yes, beta is obviously student higher, na? 100 or 200, okay. So beta DC is always higher. So you can neglect the 1. You can neglect the 1. Okay, so your current gain, okay, is nothing but the beta DC plus 1, which is nothing but approximately equal to beta DC. Correct? Okay. So your current gain is nothing but the beta DC. That's it. Okay. So what is current gain? Current gain, we call it as a how to measure the current gain practically. So practically, okay, your current gain, okay, which is nothing but the output current upon input current, okay, which is nothing but according to this equation, which is nothing but the beta DC, right? Oh, sorry, what I am writing? DC, right? Beta DC, correct? So can I write down as a I out? Okay, I out will be beta DC time, right? Beta DC time I in, right? And beta DC will be, let me say, 100 or 200. 200, correct? So what does it mean, student? What does it mean that CC amplifier वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट गेन कितना देगा? बीटा डीसी जितना. ओके, समझ आ रहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, that current gain, okay, this is equation number 2. Equation number 2, okay, that, and it says what? Current gain, student. दो टाइप के गेन होता है, करंट गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है. एक्चुअली पावर गेन भी होता है, but don't worry, we are right now discussing about current gain and voltage gain, correct? So current gain AI, okay, of CC amplifier, right? CC amplifier is, okay, current gain of the CC amplifier is how much? Beta DC. समझ आ रहा है student? Current gain of the CC amplifier is beta DC. Okay. So what does it mean, student? Okay, आपका conclusion क्या रहेगा? Equation number 2 देखो, AI equal to beta DC. Okay, and equation 1 देखो. Equation 1 क्या है? AV equal to
1. Okay, so what is your conclusion, student? AV equal to 1 and AI equal to beta DC. Okay, तो ये कहना क्या चाहता है स्टूडेंट? ये कहना क्या चाहता है? What does it mean, student? AV equal to 1 and okay, AV equal to 1 and AI equal to beta DC. So what does it mean? इसका मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट? AV equal to 1 and AI equal to beta DC. What does it mean? ये कहना क्या चाहता है? For the CC amplifier. Can anybody comment? कोई comment कर सकता है? AV equal to 1 and AI equal to beta DC. तो उसका मीनिंग क्या बनता है? स्टूडेंट Can you try, Ankush? अब लोग हो पहले तो वहां पे स्टूडेंट whether my connection is active or not. Sir, can you please repeat? क्या बात है, आप नहीं थे क्या? लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि AV equal to 1 है, हाँ ना, CC एम्पलीफायर के लिए क्या है स्टूडेंट? AV equal to 1 है, राइट? AI equal to क्या है? बीटा DC है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? What does it mean? AV equal to 1 means what? ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा? AV equal to 1, so will it amplify the voltage? Will it amplify the voltage? AV equal to 1. स्टूडेंट वोल्टेज गेन 1 है, उसका मीनिंग क्या हुआ? यस सुजल करेक्ट, अंकुश करेक्ट. स्टूडेंट वोल्टेज गेन 10 मींस व्हाट? आउटपुट 10 टाइम्स ज्यादा होगा. वोल्टेज गेन 100 मींस व्हाट? आउटपुट 100 टाइम्स ज्यादा होगा. अब वोल्टेज गेन 1 हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट? आउटपुट इनपुट जैसा ही होगा, है ना? ओके, आउटपुट विल बी सेम एज input. Okay, so here you can see that voltage gain equal to 1. That means okay, no amplification of the voltage, right? समझ आ रहा है स्टूडेंट? voltage gain equal to 1, that means what? No amplification of the voltage. Yes, Ankush or Sujal, except Ankush or Sujal. Anybody else? पता चला स्टूडेंट? Jaimin, yes, Jaimin, great. है ना Jaimin? Voltage gain 1 means what? Input and output are same, right? Vikas, Rohan, बहुत बढ़िया, great. Okay, now you tell me, student. Now you tell me. Okay, AI equal to beta DC. उसका मीनिंग क्या बनता है? चलो. AI equal to beta DC. Okay. And AI क्या होता है? Output I out upon I in, है ना? As I explained here, है ना? जैसे मैंने आपको explain किया, ये सब, ये this one, right? AI equal to beta DC. So I out upon I in equal to beta DC. So I out equal to beta DC times I in. Okay. What does it mean? AI equal to beta DC. उसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट? Can anybody tell me? AI equal to beta DC. What does it mean? Beta DC into input equal to output. Great, Sujal, great. We get a beta DC time output. Yes, Ankush, correct. यानी बट किस में? करंट में. समझो स्टूडेंट, है ना? करंट ज्यादा मिलता है स्टूडेंट. लोग, है ना? So your output current is beta DC times input current. Correct? So what does it mean, student? You are getting, okay, so output current, okay, or let me say we get, okay, or we get amplification in current. That's it, student. Amplification in output current. That's it. समझो स्टूडेंट? एक्सेलेंट. लोग ये कहना क्या चाहते हैं स्टूडेंट? ये दो स्टेटमेंट कहना क्या चाहते हैं? So you just read it out, right? ये कहना क्या चाहता है? AV equal to 1. What does it mean? There is no amplification of the voltage, correct? And AI equal to beta DC, right? AI equal to beta DC. So what does it mean? Yes, we get amplification, right? Okay, we get amplification, but in what? Current.
ओके तो आपका जो सीसी एम्पलीफायर है वो करंट एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है स्टूडेंट। आपका जो सीसी एम्पलीफायर है दैट इज योर करंट एम्पलीफायर, नॉट अ वोल्टेज एम्पलीफायर। पता चला स्टूडेंट? सो हियर यू कैन से दैट सीसी एम्पलीफायर is a current amplifier, right? Got it, student? Through the equation of AB and AI, you can confirm that this is your current amplifier. Okay, student? Yes or no? पता चल रहा है? Are you getting, student? This is your current amplifier. वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट विल बी सेम। चलो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, चलो 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 अभी प्रैक्टिकल करते हैं, राइट? प्रैक्टिकल में क्या करना है? सो लेट मी टेल यू। लुक स्टूडेंट, let me open that circuit. Which one? CC amplifier, correct? So चलिए CC amplifier open करते हैं। So CC amplifier, or otherwise we can create a new one, not to worry, right? We can create a new one also. Yes, चलिए ठीक है student, this is the CC amplifier, right? So let me show you the manual. So what manual says? Oh, this one. Look, what is the circuit? This one is the circuit, right? This is the same circuit, R1, R2, RE, RL, C2, and what are the values? So values are nothing but this one, student. Values are nothing but this one. So what we have to do is, if I read out the procedure, first of all, make the required connection shown in the figure 9.1. Select the register R1, R2, 10K, RE1K, RL2.2K, and C1, C2, 1 microfarad. Correct? So let me say we will complete step number 2 and apply VCC 10 volt, apply the AC signal 20 millivolt peak and 1 kilohertz frequency, and check the output voltage on CRO and measure the gain. Got it? So let's do this 4 steps. Let us do it. तो क्या करना सबसे पहले? Connect the circuit, set the value, apply the input, and check the output and measure the gain. Output upon input, student. Output upon input कितना है? That we have to check it, right? So let us do it, student. Let us do it. Okay. So let me say this one is the circuit, right? This one is the circuit. Okay. And let me say this is R1, R2 10K, RE1K, RL 2.2K, C2 1 microfarad, C1 1 microfarad, VCC 10, right? So VCC, let me say 10. Okay, student, VCC is 10, right? Okay. Now let me say input, right? Input, how much we have to apply? So step number 3, VCC equal to 10 volt and AC input signal 20 millivolt peak at 1 kilohertz frequency, correct? So 20 millivolt peak I have to set it. So let me double click on it and let me say 20 millivolt. So let me say millivolt. Okay, and peak here written, so peak. Alright, so okay, and 1 kilohertz frequency. So circuit is ready, student. Circuit is ready, right? Circuit is ready. Okay, and what we have to do is we have to fill up this table. Which table? This table. Look, table number 9.1. So that we have to fill up. Okay, for the given circuit. Now here everything is fine. Okay, after that what you have to do is very important step, student. Very important step. Let me say this step. Okay, check the output voltage on the CRO and measure the gain, but repeat the experiment with different input signals. Okay, and note down the observations in table 9.1. That's it, student. That's it. Very important step. What? We have to repeat the experiment for different input signal, right? So we have to increase the input signal. Okay. Change the input signal and every time measure the gain. Change the input signal and measure the gain. Okay. So let me show you
okay, the table. So let me scroll down. Okay, so here we have to change the input, and we have to measure the output, and we have to measure the gain and all that. Huh? So let's do it. So for that, let me say, okay, insert. For this one, let us fill up this table. Yes, student. Okay, so what we will do is, what we will do here, let me say we will take three different readings. Okay, number one, number two, number three. Correct. First, we will take V input. Let me say 40 millivolt peak to peak. Right. 40 millivolt. Right. 40 millivolt peak to peak. Then we will check what is output. What is output? Then we will check. Then we will gain, measure the gain practical. Right. So practical gain. Okay, which is obviously this is voltage gain AV. Okay, this is also voltage gain AV. Right. Gain means voltage gain. So practically voltage gain is nothing but the V out. Okay, peak to peak upon V in peak to peak. Right. स्टूडेंट प्रैक्टिकल गेन क्या होता है कि आपने कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट मिला so ratio of output upon input is nothing but the practical gain. Okay, so this is your column number 1, this is column number 2, so column 2 by column 1 है ना, V out upon V in, so that is nothing but AV. Okay, so that you find out practically. So let's do it. Theoretical gain I will explain you later, but let us first find out the gain. Okay, practical gain, let's do it. तो उससे पहले कह दो कि आप लोग को मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ. स्टूडेंट, tell me, are you there or not? चलिए जमीन, okay, चिंतन, great, सुजल, विकास, यशराज, great, रोहन, okay, विकास, बस इतना ही लोग ही है. Oh, अरे Yash is there or not? Yash? Yes, sir. हाँ, आप हो ना वहाँ पे? Yes, sir. ओम पता चला यस करना क्या है? Yes, sir. हाँ, okay. Look, student, in this circuit we have to apply different input signal, and we have to measure the output signal, and okay, and then we have to take the ratio of output upon input, right? That is our gain, correct? So look, this is your input, student. This is your input, where we will change this peak to peak, okay, and we will take the output across RL. ये देखिए RL यहाँ पे, right? So this is ground. So this is already grounded. Okay, so this is your output signal, student. This is your output signal across load resistor RL. So whatever the output signal, that will be available on channel B, right? So channel B is your output, and channel A, okay, your input blue line is connected to channel A, right? So channel A is your input, okay, channel B is your output. Okay, so we have to measure output and input and take the ratio of output upon input, right? Okay, and that is your practical gain. Okay, this is called practical gain. Okay, practical gain. Correct? So let's do it, student. Let's do it. Circuit is ready. Okay, the same component R110K, R210K, RE1K, RL1K, C21 microfarad, C11 microfarad, VCC 10 volt. Everything is perfect. Now let's take the reading. Student, pay attention. Let's take the reading. So let me run this. So what is our first input? 40 millivolt peak to peak, right? 40 millivolt peak to peak is our input. So I have set 20 millivolt peak. So obviously 20 into 2, 40 millivolt peak to peak, correct? So let us run it and double click it. Okay. So let me change it. So where is my output? Output is my red color. Okay, that is our output, student. That is our output, correct? So let me run this and let me pause it. That's it, student. That's it. Okay. Okay. So student, if you want to check the input, so this is your input, student. This is your input. Look, student. Look, student. I have set scale 20 millivolt. Correct. I have set it to 20 millivolt.
So here you can see that A is your input, 20 millivolt, correct? So one box equal to 20 millivolt. So this is 20 millivolt and this is 20 millivolt, correct? So 20 millivolt positive peak, 20 millivolt negative peak, right? So minus 20 plus 20. So total 40 millivolt peak to peak, student. Okay, that is your input. So that's fine. That's fine. We have set 40 millivolt peak to peak or 20 millivolt peak. So that's fine. Okay, now let's take the output. Okay, and measure it. Right. So output is on channel number B. Okay, which is red color. So let me off the input and see the output. So this is your output, student. This is your output. So what is the scale? Channel B says what? 10 millivolt per division. Right. 10 millivolt per division. So what is this? 10 millivolt and 10 millivolt. Okay. So this is total how much, student? 20 millivolt, right? And this is what? 10 millivolt, 10 millivolt. Okay. Okay. Negative direction. So let me say this is minus 20 millivolt. Got it? So what is output? Output is also approximately 40 millivolt. That's it, student. Input भी क्या था, student? Input भी क्या था? Input कितना था, याद है किसी को? Student, input कितना था, याद है किसी को? 40. क्या? बोलो बोलो, किसी ने अभी बोला? बोलना? 40. Yes, Jamin, yes, 40 millivolt. And output is also 40 millivolt. Student, look, output is also 40 millivolt, right? Okay, because one block equal to 10 millivolt. Okay, so 10 and 10, 20, 10 and 10, 20. So total 40 millivolt peak to peak. That is your output. Red color is your output, right? Channel B. Okay. So now let me open. Okay, let me open the input also. तो input का भी scale मैं क्या कर दूँ? 10 है ना, दोनों का scale same कर दूँ और input भी मुझे देखना है. Fine. So I want to see this. Right. तो ये देखिए student. Okay, आपको red और blue line overlap दिखती है? हाँ? सबकी height same है ना student? Red and blue. Look student. Huh? So blue is your input. Student, blue is your input. Okay, this blue is your input. Blue is input. And the red is output. तो आपको नहीं लगता इनपुट और आउटपुट दोनों की हाइट सेम है? हाइट ये पिक टू पिक. हाँ, डोंट यू थिंक दैट ऑलमोस्ट सेम? हाँ या ना? चलो. हाँ या ना? रेड है ना? ओके ओके, बहुत बढ़िया है ना? Obviously, student, this is common collector amplifier, right? So voltage gain 1, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा. ओके, बट लेट अस मेजर द आउटपुट परफेक्ट. हाँ, परफेक्ट मेजर करते हैं. तो चलो इनपुट को मैं कर देता हूँ 0. लेट्स मेजर द आउटपुट पीक टू पीक. सो कर्सर नंबर 2 को पॉजिटिव पीक पे रखो, कर्सर नंबर 1 को नेगेटिव पीक पे रखो. करेक्ट स्टूडेंट? नाउ यू मेजर peak to peak. Okay, now we measure the peak to peak. So peak to peak कहाँ पे देखना है? यहाँ पे देखना है. Student, this is your peak to peak, right? तो 39.443. इनपुट कितना दिया था स्टूडेंट? इनपुट हमने अप्लाई किया था 40 मिलीवोल्ट पीक टू पीक, राइट? और बदले में आउटपुट कितना मिला? 39.443. समझो, एग्जैक्ट 40 नहीं मिला है, 39.443, करेक्ट? सो दैट इज आवर फर्स्ट रीडिंग, स्टूडेंट. आउटपुट वी गॉट हाउ मच? 39.443, करेक्ट? सो आप यहाँ से एडजस्ट करके देख भी सकते हो कि मैक्सिमम कितना होगा. 39.443 से ऊपर जाता है तो नहीं जाता है. दे 39.443. चलिए ठीक है. Okay, so that is maximum value. Correct. So let's write down student. 39.443 is your reading. So let's note it down. So you got, okay, you got how much? You got 39 point, okay, 443 millivolt peak to peak, student. 39 point, oh, point to दिख ही नहीं रहा है. Okay, 443, correct, millivolt. Now you take the ratio. Student, what is gain? What is gain?
So gain is output upon input, right? Okay, gain is nothing but the V out upon V in, right? So 39.443. oh यहाँ पे मैं क्यों कैलकुलेशन करूँ, मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी. Gain is V out upon V in, okay, which is nothing but the 39.443 millivolt divided by 40 millivolt. Do it, student. Tell me the answer. 0.986. 0.98. Yes, student. 9865. 60. 60. Yes. 3 तक सही है. 986. 986 ना. Yes, sir. ओके चलो ठीक है. So look student, can you say that this is 0.986 is nothing but approximately equal to 1, है ना? 0.98. So 0.98 is nothing but approximately equal to 1. So you can see that gain is nothing but approximately equal to 1. Correct? Now let us take the next reading. Now let us increase the input. Right? Let us increase the input. So if we increase the input and take the next reading, so I will say 1 volt peak to peak. Right? 1 volt. This is also peak to peak. All readings are peak to peak. So 1 volt peak to peak, and let's check the output. Right? So next reading is आप input को 1 volt कर दो peak to peak. Right? जनरली एम्पलीफायर का इनपुट मिली वोल्ट में होता है, बट सीसी एम्पलीफायर में क्या होता है, जितना इनपुट उतना आउटपुट. तो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द मोर इनपुट, राइट? सो लेट मी से 1 वोल्ट पीक, सो 0.5 वोल्ट, okay, 1 volt peak to peak, so 0.5 volt peak only. So 0.5 positive, 0.5 negative, that become 1 volt peak to peak. Okay, so now let us run it, double click it. Oh, increase the scale, right? So this is your output. So let us stop it. So let me say single, pause it, set the cursor on the positive peak somewhere over here, right? And set the cursor on negative peak somewhere over here, right? Student, now let us, okay, slide it and check whether this is maximum or not. 985, 983, 985, 983, 985.258. Okay, and let us measure 985, 967. So somewhere over here, 985.637. Yes, that is the maximum value. Okay, so this is your reading, student. 985.673 peak to peak. Hope you know that very well. Okay, well, to see the result, this is your answer, peak to peak. Okay, peak to peak. So let us note it down, student. What is your second reading? 985.637. 985. Okay, so what we get? Okay, that is 0.985. Okay, student, 985. Actually, 637. Right, 637 millivolt. Okay, fine. 985.637 millivolt. Okay, this is peak to peak. Correct, student. Okay, now let us calculate the gain. Gain is nothing but the output upon input. So what will be the gain, student? What will be the gain? So gain AV, how much? 985.637 millivolt divided by 1 volt. So which is nothing but approximately 0.985. समझ आ रहा है student? 0.985. Correct? Which is nothing but approximately 1. Is it right or not? स्टूडेंट, इनपुट आपने दिया 1 वोल्ट, आउटपुट कितना मिल रहा है पिक टू पिक? 985.637 मिलीवोल्ट पिक टू पिक. ओके, है ना? यानी 0.985 वोल्ट. 985 मिलीवोल्ट मींस व्हाट? 0.985 वोल्ट, है ना? यू अप्लाई 1 वोल्ट, you get 0.98 volt in the output. Okay, so gain is 0.98. Fine, student. चलो हाँ या ना पता चल रहा है सब ऊपर से? चल रहा है सब ऊपर से जा रहा है? Got it ना? Got it? Okay. Let
let's increase the input student. Let's increase the input. Let's increase the input student. चलिए. Okay, next reading and last reading. Next and last. Let me say now. Let us apply 2 volt peak to peak. क्या बात है? Input is 2 volt peak to peak. Student, input is 2 volt peak to peak. Let's check the output. So for that, okay, let me stop the circuit, close it, change the input to volt peak to peak. Means how much peak? 1 volt peak. So 1 volt peak. Okay, 2 volt peak to peak. So run it, double click it. Oh, increase the output. Scale. Let me say normal. Let us take a single and pause it and set the cursor 2 on the positive peak. Set the cursor 1 on the negative peak. Right? And let us find out what is the maximum value. Okay, so 970 is the maximum value. Okay, 970. Okay, fine. Students, so this is your maximum value, correct? So this is your peak to peak output. Okay, the red signal is your output. Fine. So let's write down. So on applying 2 volt peak to peak, okay, we got 1.97 volt peak to peak. So apply 2 volt peak to peak and you got 1.97 volt peak to peak in the output. Can anybody find the gain? What will be the gain? What will 985. Sure? Yes, sir. Okay. Which is approximately equal to 1. समझ आ रहा है student? Are you getting student? Huh? You just observe this one, student. Second column देखो, third column, है ना? Third column. You just observe third column. समझ आ रहा है? You just observe this column. है ना? तो gain कितना आ रहा है? वो 0.98, which is approximately equal to 1. समझ आ रहा है? So whatever the input, approximately same output. Look, student, थोड़ा कम आ रहा है ना? If you apply 40, you got 39 point something. If you apply 1, you got 985 millivolt. You apply 2 volt, you got 1.97 volt. है ना? So slight less. So that's why your EV is approximately equal to 1. है ना? Your EV is approximately equal to 1. Correct? Okay. चलो हाँ या ना, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि थियोरिकल गेन कैसे कैलकुलेट करें. हाउ टू फाइंड आउट थियोरिकल गेन. चलो हाँ या ना, पहले तो ये पता चला कि नहीं कि वोल्टेज गेन कितना होता है सीसी एम्पलीफायर का? 1. वोल्टेज गेन कितना होता है? 1, है ना? दैट वी हैव चेक. स्टूडेंट, अभी हमने चेक क्या किया? वोल्टेज गेन इज 1. ओके, वो चेक किया स्टूडेंट, वो चेक किया, है ना? कि चाहे आप कितना भी इनपुट दो स्टूडेंट, 40 मिलीवोल्ट पीक टू पीक, 1 मिलीवोल्ट पीक टू पीक, 2, इवन 4 दे दो तो भी ऐसा होगा. ओके, बट उतना सारा नहीं देना है. Right, so output will be same. So conclusion is what? Output is same as input. Why? Okay, output voltage actually, output voltage same as input voltage. Why? Because gain is 1. Okay, voltage gain is 1 in a CC amplifier. That's it. Okay, that is speciality. Voltage gain 1 होता है. जितना हो input उतना ही output. Correct? Okay. Okay, that's why student. That's why उसका नाम क्या है student? लोग ये देखिए student, उसका नाम क्या है प्रैक्टिकल का? Oh, चला गया. Yes, emitter follower. Look student, emitter follower as a buffer. Okay, as a buffer. Emitter follower as a buffer. Right, so emitter follower क्यों student? Why emitter follower? Because, right, okay, because whatever you apply the input, student, whatever the input you applied, right, मान लीजिए आप input दे रहे हो वो 1 volt peak to peak, right? Okay, so ये जो emitter terminal है, okay, emitter जहाँ से हम output लेते हैं, fine, जहाँ से output लेते हैं, तो output भी 1 volt peak to peak होगा. क्या बात है student, right? So your output, okay, at emitter terminal follows the input, right? This is input. So input 2 volt दिया तो output भी 2 volt होगा.
इनपुट 0.5 वोल्ट दिया तो आउटपुट भी 0.5 वोल्ट होगा, हो जाएगा. सो आउटपुट फॉलोज द इनपुट, राइट? आउटपुट follows the input, so that's why it is called emitter follower. Emitter terminal is following the input terminal, so that's why it is called emitter follower. Okay, output is following the input. Another one is what, student? Buffer. Buffer क्या कहते हैं student? Buffer. तो buffer का काम क्या होता है student? What is the function of the buffer? That okay, buffer क्या करता है? Whatever the input, okay, whatever the input, okay, you will get the same output over here. Okay, same output over here. Okay, but with some delay. Okay, buffer क्या करता है? Temporary store करता है, right? Okay, so input temporary stored or delayed, and you got the output. So output और input same होता है buffer का. Okay, fine. Buffer का काम क्या होता है? सिर्फ pass करना, right? Whatever the input you pass as output. Okay, so it's like temporary store करता है वो. ओके या फिर आपके इनपुट को डिले देता है. तो बफर का काम क्या होता है? वो आउटपुट को चेंज नहीं करता है, समझ आया? आउटपुट इनपुट जैसा ही होता है. फाइन. बफर का काम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज जैसा, रिवर्टिंग या फिर डिले प्रोवाइड करना है. बफर का काम क्या होता है? सिग्नल को डिले प्रोवाइड करना होता है. फाइन. ओके, so that's why since the output signal is same as input signal, right? Okay, आपका वोल्टेज सिग्नल 1 वोल्ट पिक टू पिक इस सर्किट में से पास होगा, बट आउटपुट में भी वही मिलेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज बफर. वोल्टेज बफर, दिस इज व्हाट वोल्टेज बफर. वोल्टेज बफर मींस व्हाट? आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट. ओके, देयर इज नो चेंज स्टूडेंट, देयर इज नो चेंज. ओके, so that's why it is called emitter follower as a buffer. So ये जो आपकी पूरी सर्किट है, right, it works as a buffer. Okay, you just apply 1 volt peak to peak. Okay, you also get 1 volt peak to peak. That's it. Oh, sorry, बहुत ही pass down किया. Okay. स्टूडेंट, बफर का काम क्या होता है? जितना आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट में मिलेगा. सेम. But this is voltage buffer. Which buffer? Voltage buffer. ठीक है, यानी वोल्टेज चेंज नहीं होगा. राइट, आपका सिग्नल इस सर्किट में से पास हो जाएगा, बट फिर भी जितना वोल्ट इनपुट में है उतना ही वोल्ट आउटपुट में आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस अनदर नेम इज नथिंग बट द वोल्टेज बफर. सीसी एम्पलीफायर इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज बफर सर्किट. गॉट इट स्टूडेंट? चलो हाँ या ना, बोलो. बफर नहीं, आप वीडियो देखते हैं ऑनलाइन तो आप कहते हो बफरिंग हो रहा है, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? आपका जो डेटा आ रहा है वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है और वापस वही डेटा आपको दिखाई दिया जाता है. रिवर्टिंग उसी डेटा को प्रोसेस करता है, यानी टेम्पररी स्टोर करता है. डेटा को चेंज नहीं करता है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है. ओके, उसमें चेंज नहीं आता है. तो दिस इज लाइक बफर. जो भी इनपुट आता है आउटपुट में मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. तो भले ही आपका डेटा सर्किट में से पास हो गया, डेटा चेंज नहीं होता है. So this is like a buffer, voltage buffer. Okay, but the thing is what, student? Okay, now what we will do is, so that is CC amplifier. Now how to calculate the gain practically, right? Theoretically, sorry, practical तो बहुत easy है. Output upon input, right? So how to measure the gain theoretically? So let's do it. So that steps are already given in your book. Look, student. सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट? फॉर दिस सर्किट यू जस्ट फाइंड आउट, जस्ट अ सेकंड ना स्टूडेंट. लुक, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन, ओके, व्हाट यू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक स्टूडेंट, फाइंड आउट VTH. ओके, मींस आप जितना VCC दे रहे हो, लेट मी से 10 वोल्ट, यू जस्ट पुट इट इनटू दिस वन. सो यू जस्ट फाइंड आउट VBB, राइट? नाउ okay, after that, okay, अब जो नहीं स्टैंडर्ड सी एम्पलीफायर का सर्च करते हो वही होता है ना, सी एम्पलीफायर का स्टेप्स, राइट? सो वंस यू फाइंड आउट VBB, okay, VBB, which is nothing but the voltage across R2. Okay, so once you find out VBB, subtract 0.7, so that become VE, right? So VE is nothing but okay, you find out VE, right? So VE is nothing but the VBB minus VBE, okay, which is nothing but a 0.7.
Right? So once you get VBB, you just put it over here, you get subtract VBE, you get VE. So you put it VE over here. So IE you will get, IE is nothing but VE by RE, right? So RE is known, okay, 1 kilo. And you once you get the IE, put it into this equation, right? So if you get the IE, you will also get RE dash. And once you get RE dash, you just put it into this equation of gain, which is nothing but the this is small RE, right? So this is small RE upon small RE plus RE dash, right? So that is nothing but the equation of voltage gain. Huh? So you just find out this small RE and RE dash. Okay, so small R is nothing but the RE parallel RL. Easy. And RE dash, okay, this is RE dash, okay, that you find through these steps, right? So these steps will give you RE dash, right? This steps will give you RE dash. And RE is known. So why this? This is called theoretical gain, a theory gain. And you just compare this theory gain with the practical one, okay? You just compare this theoretical gain with the practical one, right? So practical one is how much? Approximately 1. So just find out theoretical gain. Okay? Find out. Fine? Right. Okay, so you just follow this equation number 9.3456, you will get your answer. Okay? Hope you got it, student. आप लोग हो वहाँ पे? Let me have some water. थोड़ा पानी पी लेते हैं. चलिए, ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट. अभी अभी हाफ हुआ ये एक्सपेरिमेंट और हाफ बाकी है. तो चलिए कंप्लीट करते हैं. रुक जाइए थोड़ी देर. लेट्स हैव सम वाटर. Right? Okay, we will set it one more pick to pick. Correct? Fine, student. We will set it one more pick to pick. Okay? And measure the output voltage at different value of VCC. Very important, student. Very important. Different value of VCC and note down the observation table 9.2. Okay? And note down the theoretical calculated gain and practical gain in table 9.2. So let's measure the let's fill up the table 9.2. So 9.2 में क्या करना है स्टूडेंट? इनपुट आपको फिक्स रखना है स्टूडेंट. इनपुट you have to keep it a fix. So you just keep the input 1 volt fix. Okay, and what you have to vary student? Vary the value of VCC. Okay, तो आपका जो VCC है उसको आपको vary करना है स्टूडेंट. VCC को vary करना है. So let's have a look. Let's have a look at table number 9.2. Fine. So if I scroll down, this is observation 9.2. Variations of gain with VCC. तो चलिए VCC का वेरिएशन वाला टेबल फिल अप करते हैं. तो आपको इनपुट फिक्स करना है 1 वोल्ट पिक टू पिक and 1 kilowatt frequency. So let's take it. Okay, experiment number 9, table number 9.2. Correct. So let's do it, student. Let's do it. Okay. So insert. Okay. Let's fill out this table. Fine. तो चलिए स्टूडेंट VCC हम वेरी करेंगे. कितना वेरी करेंगे? इनपुट को फिक्स कर देते हैं स्टूडेंट. इनपुट लुक स्टूडेंट, इनपुट को फिक्स रखना है. फिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनपुट विल बी फिक्स्ड, करेक्ट, एंड 1 kilohertz frequency. Let's do it. So where is our circuit? This is our circuit. Let me close it, pause it. 1 volt peak to peak, so 0.5 volt peak. Okay, and VCC 10 volt. Great. So VCC 10 volt, right? So what will be the readings? So readings we will take. VCC is how much volt? 10 volt. Okay, we will go with 15 volt and we will go with 20 volt, right? So this is reading number 1, reading number 2, reading number 3, correct? And let us measure V output. Okay, and gain you know it, AV, which is nothing but the V out upon V in. Sure. Okay. Theoretical, that you know it. So let's fill up this column number 2 and 3, right? Column number 1, column number 2, column number 3, column number 4. Okay. Correct.
So here VCC is 10, right now VCC is 10, and let's measure how much output we got. Input is 1 volt peak to peak. How much peak to peak we got? Run it, double click it, and measure it. Okay, okay, measure it. So, okay, single, pause it. Okay, so you pause it. Now let me. Okay, let me measure peak to peak. Let us measure it. So set it on positive peak, your cursor on the positive peak, and set the cursor cursor 2 on the positive peak and cursor 1 on the negative peak. Correct? How much we get, student? How much we get? So we get, okay, let me check for the maximum value. 782, 785, 785.545, and then decreasing. So 785.893. Great. That is maximum value, student. 985.893. क्या बात है? Okay, so 985.989. Great. Okay, let me find out the maximum value. 985.989. That's it, student. That's it. So how much maximum we got, student? So we got this much maximum. Okay, so we got this much maximum, 985.6 millivolt. Okay, that is our peak to peak output. This is peak to peak output, right? This red signal is having this much peak to peak. So let us write it down, student. Let's write it down. 985.6. Oh, just a second, student. How much maximum? I think 989 was maximum. Na? This much is maximum. 985.989 millivolt. So let's write down this maximum peak to peak. So our reading is, okay, our reading is 985. Okay, 985. Okay, 0.989, right? 0.989. Okay, millivolt. Let me say millivolt peak to peak. Correct? Okay. Input is 1 volt, which is nothing but the 1000 millivolt. Right? Peak to peak. So what is the gain, student? Can anybody tell me what will be the gain? What is the gain, student? What is the gain for this reading? Can anybody tell me? 0.98598. Exactly, student. It is very easy. 985.989 divided by 1000, right? So this is what? 0.9859. So let me say 986. 9859. So 986. Okay. Now let's take the second reading where we will increase the VCC to 15. Let us increase the VCC to 15. Student, let us increase the VCC to 15. So pause it. Sorry. Change the value. So where is VCC? VCC is this. Let me say 15. Enter. Run it. Let me say, oh, क्या बात है, ये बहुत बड़ा screen हो गया. This much is fine. Okay, and let me say normal, and let me say single now, and let me pause it. Let me set it on positive value. Let me set cursor 1 on negative value. So let me say okay 989 point, where is 989.096. Let me set it. Okay, how much maximum? So 989.096, right? 989.096. Okay. So we got this much maximum, student. We got this much maximum, 989.096 millivolt. Okay. So let's write down the second reading, student. Let's write down the second reading. So second reading is what? Okay, we have not changed input, student. Input is fixed. Very, very important, student. Input is fixed. V in is fixed. We are changing only VCC. So VCC 15, we got 989.096, right? 989.096, I think, right? 96. Got it. So how much we got? So your gain is nothing but how much?
0.989. Is it fine, student? पता चल रहा है? पता चला? We change the VCC, student. We change the VCC. हाँ, VCC चेंज किया स्टूडेंट. पहले VCC कितना था? 10 था, तो उसका 15 ले गए. ओके, अब क्या करना है? नेक्स्ट 20 ले जाएंगे, है ना स्टूडेंट? ओके, लेट्स टेक द VCC 20. Fine. Okay, let's take the VCC 20. So if I take the VCC 20, okay, so let's take the last reading. Let's take the last reading, VCC 20. So let me stop the circuit, close it, change it. Oh no, don't change this, change VCC. So change VCC 20. Okay, run it. Now let's observe the peak to peak. Correct. So let me say normal. After that, let me say single, pause it, set the cursor to on the somewhere here, positive peak, set the cursor one on negative peak. Okay, and find out what is the maximum value we can get, right? So 990. Okay, 990 is the maximum. So 990.211 or 990.407. Great. Oh, so 990.407, right? So that is our maximum peak to peak, right? 990.4. Okay, let's write down 990.4. So that is our next reading, right? 990, student. 990 point how much? 407, right? Okay, 990.407. Okay, 990.407, right? Millivolt peak to peak. So how much gain? So gain is how much? 0.990. That's it, student. That's it. बता रहा है? हाँ, student. Okay. So can you comment on this thing, student? As we increase the VCC, did you find any change in AV? Gain में कुछ फर्क पड़ा? Student, gain में कुछ फर्क पड़ा? Sorry. Look at this table. As we increase the VCC, did you notice anything? Tell me, did you notice anything? Okay, did you notice anything? Student? Yes or no? Is this correct statement? Is this statement is correct? As we increase the VCC, your gain tends to 1. Is it fine? Sir. Look, VCC जब 10 था, है ना, तो गेन कितना मिला? 0.986, है ना, 0.986. फिर VCC 15 किया, तो VCC 15 किया तो वो गेन कितना बढ़ा? 0.980. फिर VCC 20 किया तो वो गेन कितना बढ़ा? 0.990, है ना. तो जैसे आप इंक्रीज करते हो क्या VCC, है ना, तो गेन 1 के नजदीक जाता है ना. 0.986, 0.989, 0.990, 0.992 जाएगा, फिर 0.993. ओके, बट द थिंग इज व्हाट, VCC इंक्रीज करेंगे तो पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा. फाइन, सो डोंट इंक्रीज VCC टू मच. ओके, डोंट इंक्रीज द VCC टू मच. तो ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट? ऐसा कैसे हुआ? सो फॉर दैट हैव अ लुक एट दिस इक्वेशंस. लुक स्टूडेंट, ये इक्वेशन ध्यान रखो स्टूडेंट. ओके, ये इक्वेशन ध्यान रखो. फाइन, तो अभी ये कहना क्या चाहता है स्टूडेंट? व्हाट इट सेज, राइट? सो ये ऐसा कहना चाहता है स्टूडेंट कि VCC इंक्रीज होगा. हाँ, सबसे पहले कौन इंक्रीज होगा स्टूडेंट? एज VCC इंक्रीज. VCC है ना, 10 वोल्ट 15 वोल्ट है ना, हमने अभी ट्राई किया है ना. एज VCC इंक्रीज 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट, राइट? तो क्या होता है स्टूडेंट? VCC इंक्रीज होता है तो उसके चलते VB भी इंक्रीज होता है. समझ आ रहा है स्टूडेंट? VB भी इंक्रीज होगा, सीधी बात है ना. देख ले, VCC इंक्रीज होगा
है ना, तो VB भी इंक्रीज होगा, सीधी बात है स्टूडेंट, फाइन। अब हुआ क्या, VE क्या था, राइट, VE इज व्हाट, VBB minus 0.7, ओके, विच इज VBE, ओके। तो सीधी बात है स्टूडेंट, फाइन। अब क्या होगा स्टूडेंट, लुक, as VBB increase, don't you think that VE increase, है ना? So VBB increase, you can say that VE increase, right? VE increase, correct। अब देखिए ये VE यहाँ पे इंक्रीज होगा तो IE इंक्रीज होगा, सीधी बात है स्टूडेंट, राइट। तो VE इंक्रीज होगा तो उसके चलते IE इंक्रीज होगा स्टूडेंट, IE इंक्रीज होगा, फाइन स्टूडेंट, IE इंक्रीज होगा। अब IE इंक्रीज होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, लोग IE इंक्रीज होगा तो RE डैश डिक्रीज होगा, फाइन। IE इंक्रीज होगा तो RE डैश डिक्रीज होगा, सो IE इंक्रीज, so you can say that, okay, oh sorry, RE dash decreases, they are inversely proportional student, IE increase होगा RE dash decrease होगा, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, RE dash और AV क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, RE dash, so if RE dash decreases, can you say that gain increases, है ना, RE dash है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो न्यूमरेटर ये AV इंक्रीज होगा, राइट। So RE dash decrease, you can say that as a result your voltage gain increases, सीधी बात है स्टूडेंट, fine। So now you can say that as VCC increases, you can say that your voltage gain increases, right, and your voltage gain tends to 1, okay, as you increase the VCC, समझ आ रहा है स्टूडेंट, your voltage gain tends to 1, आपका voltage gain है वो 1 की ओर जाएगा, fine, as you increase the VCC from 10 volt, 15 volt, 20 volt, okay, but unnecessary power consumption increase हो जाएगा, fine, but this is the effect। आपका जो टेबल नंबर 9.1 है वो ये कहना चाहता है, समझ आया, okay, अरे there, oh अंकुश, AV remains same, क्या बात है अंकुश, okay अंकुश, how AV remains same student, सेम रहेगा AV, yes अंकुश, AV remains same, ओके, यानी आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा था, ऐसा अंकुश, AV remains same, ऐसा, AV remains, but don't you think that using this equation, AV obviously, AV increases near to 1, no, it will never cross the 1, 1 को क्रॉस नहीं करेगा, but towards the 1 ट्रैवल करेगा, हाँ, okay, obviously it will not cross the 1, fine। Now let me tell you student, so this is your table number 9.2 कि VCC इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो सीधी बात है VCC इंक्रीज करोगे तो okay, your gain tends to 1, okay, but now in that you have to also calculate this one student, आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा theoretical gain, राइट। सो theoretical gain कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो तो आपको पता है, उनके मैनुअल में दे रखा है, fine, so you just follow the steps, you will find out AV, okay, आपको voltage gain मिल जाएगा, fine student। Now let me tell you one thing student, let me tell you one thing, look, okay, so what is the use of use of, since voltage gain is 1, okay, since voltage gain is 1 of CC amplifier, right, okay, and current gain प्रोड्यूस करता है, ओके, तो इसका यूज क्या है स्टूडेंट, हाँ, वोल्टेज तो जितना आप 1 वोल्ट दोगे तो आउटपुट में 1 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट दोगे तो आउटपुट में 2 वोल्ट मिलेगा, फाइन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ओके, ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सर्किट, राइट, सीसी एम्पलीफायर, तो ऐसा सोचो स्टूडेंट कि ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, फाइन स्टूडेंट, हाँ, माइक्रो कंट्रोलर, ओके, माइक्रो कंट्रोलर, फाइन। सो ये उसके आउटपुट पिंस, ओके।
और ये एक एलईडी है, फाइन, एलईडी, से फाइन, और आगे कुछ सर्किट है, फाइन, बट दिस इज एलईडी स्टूडेंट, लाइट एमिटिंग डायोड, राइट, हाँ दिस इज एलईडी, ओके, लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइन, ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, ओके, so we have to connect this, so you just connect this using wire and you just connect it to LED, fine, okay। So output current कौन देगा स्टूडेंट, who will provide the current, so current will be provided by microcontroller, तो microcontroller है वो source कहलाएगा, source, right, okay, produce current, okay, source will do what, produce current, right, produce current, right, एंड एलईडी है वो सिंक या लोड कहलाएगा, लेट मीन्स लोड, ओके, वो क्या करता है, सिंक्स द करंट, करंट और ड्रॉ द करंट, लेट मीन्स आपको सिंक नहीं बोलना है तो ड्रॉ द करंट, ओके, वो उतना कंज्यूम करेगा, लेट मीन्स ड्रॉ भी नहीं बोलना है तो सिंपल लैंग्वेज में कंज्यूम करेगा, फाइन, consume the current, right, okay, why, because LED is a load, right, and microcontroller is a source, correct। अब माइक्रोकंट्रोलर क्या कहता है और एलईडी क्या कहता है, ओके, दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है, तो एलईडी क्या बोलती है कि मुझे चाहिए, राइट, लेट मी से 100 मिली एम्पियर, एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फाइन, हाँ बट ओके ओके ओके, लेट मी से, ओके ओके, माइक्रो ले लेते हैं, चलिए माइक्रो ले लेते हैं, फाइन, माइक्रो, ओके, सो लेट मी से उसको, लेट मी से 10,000 माइक्रो एम्पियर चाहिए, आर गेटिंग, हाँ 10,000 माइक्रो एम्पियर चाहिए यार, दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, गेटिंग, एलईडी सेज व्हाट कि मुझे 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए, ओके, तो ही एलईडी ग्लो होगी, राइट, एलईडी विल ग्लो, है ना, ओके, रेड कलर की एलईडी है तो वो रेड कलर दिखाएगा व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू द एलईडी, ओके, ओके, दैट इज रिक्वायरमेंट, ओके, और इतना तो मिनिमम चाहिए स्टूडेंट, इतना तो उसको मिनिमम करंट चाहिए ही चाहिए, 10 मिली एम्पियर, ओके। माइक्रो कंट्रोलर से इस व्हाट कि उसका जो आउटपुट करंट स्टूडेंट, उसका जो आउटपुट करंट है वो है, लेट मी से 0.1 मिली एम्पियर, राइट, 0.1 मिली एम्पियर क्या है स्टूडेंट, ओके, मैक्सिमम, ओके, माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड 0.1 मिली एम्पियर, ओके। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या बोलता है कि ओ मैं तो 0.1 मिली एम्पियर दे सकता हूँ, एलईडी क्या बोलता है कि ओ मुझे 0.1 मिली एम्पियर तो कुछ नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट 10 मिली एम्पियर चाहिए, ओके, ओके, सो द थिंग इज व्हाट स्टूडेंट, ओके, माइक्रो कंट्रोलर क्या बोलता है, मैं 0.1 मिली एम्पियर दे सकता हूँ, ओके, एंड लेट मी से 5 वोल्ट, ओके, तो 0.1 मिली एम्पियर एंड 5 वोल्ट, ओके, और एलईडी क्या कहती है कि मुझे तो 5 वोल्ट चाहिए और 10 मिली एम्पियर चाहिए स्टूडेंट, 10 मिली एम्पियर चाहिए, तो ये मैच नहीं हो रहा है स्टूडेंट, फाइन, आपका सोर्स है लोड को जितना करंट चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है, फाइन, आपका जो सोर्स है माइक्रो कंट्रोलर वो लोड को 10 मिली एम्पियर करंट नहीं दे पा रहा है, फाइन, ओके स्टूडेंट, इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड 10 मिली एम्पियर करंट, बिकॉज वो तो क्या कहता है कि मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 0.1 मिली एम्पियर है, ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या करे स्टूडेंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सो द सॉल्यूशन इज व्हाट कि आप ये जो सर्किट है उसको डिस्कनेक्ट करो और ये दो जो सर्किट है इसको डिस्कनेक्ट करो, लेट मी से यूज डिस्कनेक्टेड, करेक्ट, एंड व्हाट टू कनेक्ट, उसकी जगह क्या कनेक्ट कर दो, तो उन दोनों के बीच में एक सीसी एम्पलीफायर कनेक्ट करो, तो इसका जो भी आउटपुट है, ओके ओके, वो आप जाने दो सीसी एम्पलीफायर में, राइट, सीसी एम्पलीफायर, राइट, एंड दैट सीसी एम्पलीफायर यू कनेक्ट टू द एलईडी, राइट। अब सीसी एम्पलीफायर क्या करता है स्टूडेंट, उसका स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट, सीसी एम्पलीफायर का स्पेशलिटी क्या है, तो सीसी एम्पलीफायर क्या करता है कि ओ मेरा वोल्टेज गेन है 1, राइट, अप्रोक्सीमेटली, ओके, एंड मेरा करंट गेन है बीटा डीसी, ओके, बीटा डीसी, लेट मी से, राइट,
So AI is nothing but the I out, right? I out upon I in. So you can say that I out equal to beta DC times I in, right? Okay, and let us assume that beta DC is 100, right? So आपका आउटपुट करंट होगा वो इनपुट से 100 टाइम ज्यादा होगा, बीटा जितना ज्यादा होगा. ओके, सो दिस इज योर आई आउट. ओके, एंड दिस इज योर आई इन, राइट? ओके, तो इनपुट जो करंट होगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? एंड आउटपुट में मिलेगा, करेक्ट? सो ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट. तो अब क्या हुआ स्टूडेंट? हाँ, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, राइट? सो नाउ द सिनेरियो इज व्हाट, कि ये जो 0.1 एम्पियर है, सॉरी 0.1 मिली एम्पियर, राइट, वो कहाँ पे जाएगा? एज आई इन, करेक्ट? सो आई इन विल बी 0.1 मिली एम्पियर, राइट? Now that will be multiplied with this beta DC, which is 100, right? So because the gain, okay, this AI, right? Okay, what is the current gain? So current gain is nothing but the 100. Okay, so input current 100 times multiply hoga, right? So what is output current? So output is 100 into 0.1, which is nothing but the 10 milliampere. Okay. Voltage gain is 1. Student, voltage gain is 1. So input may be 5 volt, आउटपुट में भी 5 वोल्ट. ओके, इनपुट में भी 5 वोल्ट, ओके 5 वोल्ट, आउटपुट में भी 5 वोल्ट, बिकॉज वोल्टेज गेन इज 1, राइट? ओके, वोल्टेज गेन इज 1, बट आउटपुट करंट इज व्हाट स्टूडेंट? आउटपुट करंट इज 10 मिली एम्पियर, करेक्ट? आउटपुट करंट इज 10 मिली एम्पियर. समझ आया? इनपुट करंट इज 0.1 मिली एम्पियर, सो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट करंट. ओके, एंड नाउ यू कैन से दैट ओ एलईडी को 10 मिली एम्पियर चाहिए था, तो 10 मिली एम्पियर उसको मिल गया. समझ आया स्टूडेंट? हाँ, समझ आया? तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, बट करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा. स्टूडेंट, माइक्रो कंट्रोलर का करंट कैपेसिटी बढ़ गया ना? हाँ, तो माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट में सीसी एम्पलीफायर कनेक्ट करो, सीसी एम्पलीफायर फिर एलईडी या कोई भी लोड है उसको कनेक्ट कर दो. समझ आ रहा है स्टूडेंट? सो दैट इज द यूज ऑफ सीसी एम्पलीफायर. ऐसा नहीं कि वोल्टेज गेन 1 है तो वो यूजलेस हो गया, ना ना ना, तो भी वो यूजफुल है कि वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा, बट आपके करंट की कैपेसिटी को वो बढ़ा देगा. फाइन, ओके, इट विल इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, राइट? ओके, बिकॉज दिस इज अ करंट एम्पलीफायर. समझ आ रहा है कि चले गए स्टूडेंट? हेलो विकास, यशराज, अंकुश, रोहन, सुजल, जयमीन, चिंतन, ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट. हाँ, ओके. now let me talk about the last one. बाद में लैब खत्म हो जाएगा. ओके, देखिए चलिए अब लास्ट में बात कर देता हूँ. हमने क्या बोला स्टूडेंट? तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है स्टूडेंट, ये देखिए, हाँ, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बहुत कम आउटपुट देता है. फाइन, ओके, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ओके फाइन. सो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ओके, वो बहुत ही कम करंट देता है. फाइन. अब ये जो सीसी एम्पलीफायर, एक सीसी एम्पलीफायर है, ओके, और एक हमारा लोड है एलईडी ड्राइवर, एलईडी, नॉट अ ड्राइवर, एलईडी, जस्ट एलईडी, राइट? ओके, सो दिस इज योर एलईडी. ओ जस्ट अ सेकंड, मैं बहुत ऊपर आ गया, क्या बात है. ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट स्टूडेंट, ये एलईडी है, तो ये अपना सोर्स है, ये अपना सोर्स है जो करंट प्रोड्यूस करता है. ये अपना सिंक या लोड है, ओके, जो करंट को कंज्यूम करता है, करेक्ट? ओके, नाउ माइक्रो कंट्रोलर सेज व्हाट स्टूडेंट? माइक्रो कंट्रोलर सेज व्हाट, कि मैं आउटपुट में, ओके, स्मॉल करंट दूंगा, ओके, स्मॉल करंट इन आउटपुट. ओके, अब लोड क्या कहता है कि ओ मुझे तो बिग करंट चाहिए, लार्ज, लेट मी लार्ज, ओके, आई वांट लार्ज करंट, तो ही मैं ग्लो करूंगा. ओके, लार्ज करंट इन इनपुट. ओके, इसके इनपुट में उसको बहुत बड़ा करंट चाहिए. ओके, तो ये मिसमैच हुआ ना. माइक्रो कंट्रोलर बोलता है कि ओ मैं तो छोटा सा आउटपुट दे दूंगा करंट. ओके, एलईडी क्या बोलता है कि मुझे तो बहुत सारा करंट चाहिए. ओके, तो द थिंग इज व्हाट, कि जो चीज छोटा करंट आउटपुट में देता है तो उसका आउटपुट इंपीडेंस बड़ा होता है. स्टूडेंट लुक, द थिंग इज व्हाट, ओके, ये माइक्रो कंट्रोलर है, वो स्मॉल आउटपुट देता है, तो उसका जो आउटपुट इंपीडेंस होता है ना, वो हाई होता है, राइट? ओके, वो कैसा होता है? हाई होता है.
बिकॉज वो स्मॉल करंट देता है। फाइन। अब जो लार्ज करंट इनपुट में लेता है तो उसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो लो होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसीलिए उसको लार्ज करंट चाहिए। ओके, लार्ज करंट मींस व्हाट, कि उसका इंपीडेंस छोटा होगा। स्मॉल करंट मींस व्हाट, कि उसका इंपीडेंस बड़ा होगा। करेक्ट। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि ये जो इंपीडेंस का जो मिसमैच है, एक बोलता है कि मैं छोटा सा करंट दूंगा, दूसरा बोलता है मुझे बहुत सारा करंट चाहिए, तो ये इसको मैच करने के लिए हम कैसे ले आए, सीसी। तो सीसी एम्पलीफायर का क्या होता है कि वो छोटा सा करंट लेता है। व्हाई? बिकॉज उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। करेक्ट। और इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो होता है। राइट। ओके, सॉरी, इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, जस्ट सेकंड, मैंने यहाँ गलत लिखा है। वो इनपुट इम्पीडेंस उसका छोटा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बड़ा होता है। फाइन। ए, सॉरी, राइट, स्टिल I'm not writing properly. Yes. ओके, आउटपुट इम्पीडेंस बड़ा होता है। करेक्ट। हाँ, so the thing is what, oh sorry, Zedin is high। एक मिनट, रुक जाओ, मैं क्या लिख रहा हूँ ये। लोग स्टूडेंट, सीसी एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ओके, और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। फाइन। ओके, सो इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, व्हाट डज इट मीन, कि उसको स्मॉल करंट चाहिए। राइट। इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको स्मॉल करंट चाहिए। ओके, स्मॉल करंट नीड्स स्मॉल करंट, हाँ, नीड स्मॉल करंट। एंड जेड आउट कम है, उसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोड्यूस मोर करंट। ओके, करंट ज्यादा होता है, इंपीडेंस लो होता है, तो प्रोड्यूस मोर करंट और लार्ज करंट। राइट। हो जाएगा स्टूडेंट। सो नाउ द थिंग इज व्हाट, अब आएगा समझ में। हाँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। लुक, माइक्रो कंट्रोलर क्या कहता है कि ओ मैं तो छोटा सा करंट दूंगा। फाइन। व्हाई? बिकॉज उसका इंपीडेंस हाई है। ओके, अब इसको कनेक्ट करना है कॉमन कलेक्टर के साथ। अब कॉमन कलेक्टर क्या कहता है कि मुझे तो इनपुट में छोटा सा ही करंट चाहिए, है ना, स्मॉल करंट चाहिए। व्हाई? बिकॉज मेरा तो इंपीडेंस हाई है। तो माइक्रो कंट्रोलर स्मॉल आउटपुट में देता है और ये सीसी एम्पलीफायर इनपुट में स्मॉल करंट लेता है, तो हो गया मैच, है ना। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट इंपीडेंस हाई और सीसी एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस हाई, तो मैच, हाई हाई। अब सीसी एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस कैसा है, तो लो है। क्यों लो? क्योंकि वो तो ज्यादा करंट देता है, प्रोड्यूस मोर करंट। और एलईडी को भी क्या चाहिए, लार्ज या मोर करंट, है ना। तो एलईडी का रेजिस्टेंस लो है, तो सीधी बात है सीसी एम्पलीफायर का भी रेजिस्टेंस लो है, तो लो रेजिस्टेंस मैच हो गया, है ना। तो सीसी एम्पलीफायर को आउटपुट कनेक्ट करना है एलईडी के साथ, ओके, जिसको ज्यादा करंट चाहिए। समझ आ गया? तो सीसी एम्पलीफायर का इनपुट में कम करंट लेता है बट आउटपुट में ज्यादा करंट देता है, तो इसलिए इनपुट में माइक्रो कंट्रोलर लगाओ जो छोटा सा करंट देता है, और आउटपुट में एलईडी लगाओ जो हाई करंट लेता है ना। तो दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग। ओके, इम्पीडेंस मैचिंग। तो इम्पीडेंस मैच करना हो, ओके, कि सोर्स है वो करंट नहीं दे रहा है और लोड बहुत सारा करंट मांग रहा है, तो सोर्स और लोड के बीच में ये सीसी एम्पलीफायर कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा कि सोर्स के पास से छोटा सा करंट लेके वो बड़ा सा करंट लोड को दे देगा, है। तो इस टेक्निक को कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। सो सीसी एम्पलीफायर इज आल्सो यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। करेक्ट। डोंट वरी, अगर बहुत इम्पीडेंस का पता नहीं चला है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बट दैट इज वन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ अ सीसी एम्पलीफायर। करेक्ट स्टूडेंट, पता चला? हाँ या ना? के चिंतन, अंकुश, जमीन, रोहन, फाइन स्टूडेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको पता चला, ग्रेट। विश्राज, रोहन, विकास, ओके ओके, हाँ। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। दो ऑब्जर्वेशन टेबल है, एक में जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, गेन नियर टू 1 होगा 9.1, एंड टेबल 9.2 you just increase the VCC, your gain tends to 1,
गेन थोड़ा इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा, फाइन. सो दैट रीडिंग्स वी हैव ऑलरेडी टेकन, राइट. ये रहे रीडिंग्स, तो ये रीडिंग्स आपको लिखना है और गेन थियरी कैलकुलेट करना है, फाइन. व्हाट इज थियरिकल गेन, दैट यू फाइंड आउट. ओके, यू फाइंड आउट. सो यू जस्ट फाइंड आउट. ओके, स्टेप्स दिए मैनुअल में. Please do it, huh? Please do it. Okay. चलिए, कोई डाउट स्टूडेंट? Any doubt? No. Fine. Action. Create. ओके ओके, बढ़िया. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये मैनुअल का प्रिंट आउट निकाल के इसमें ये सब टेबल और सब फिल अप करना है. स्टूडेंट, यू हैव टू फिल अप दिस टेबल, राइट. यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस वन, फाइन. तो मैं आज गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा एंड आई विल पास ऑल दिस नोट्स. हाँ, ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. ओके, आई विल पास दिस ऑल नोट्स टू यू, राइट. तो आप रीडिंग लिख सको, राइट, पढ़ सको. ओके, ठीक है. चलिए, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो आपका प्रेजेंस. नो सर, हाँ, ओके ओके, चलिए. एडिट कर सकते हो पीडीएफ फाइल को? क्या 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 पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकालना हो तो? ये पीडीएफ है स्टूडेंट, हमें पीडीएफ ही दिया गया है, राइट. तो उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ओके. है ना. और उसमें ये सब आपको टेबल, कंक्लूजन और वो जो इस वर्ड पैड में खोलते हैं तो इसमें एडिट हो जाता है, इसलिए. हाँ, सही है सही है. बट हमें वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके स्टूडेंट फिलअप करेंगे और बाद में आप उसका एक पीडीएफ फिर से बना के अपलोड करना है ना. ओके, ठीक है. चलिए, और कुछ डाउट स्टूडेंट? प्लीज मार्क योर अटेंडेंस स्टूडेंट, मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. Mark your attendance in the chat box, student. Because my attendance software is not working. Extension. Enable grid view. Okay. Please mark your attendance, and if you are having no doubt, then you may leave the session. ठीक है, आज यही रुकते स्टूडेंट. Don't forget to mark your attendance. And please don't join late. हाँ, अभी आज एक दो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, so please join in time. हाँ, 5 मिनट का वेरिएशन ठीक है, बट आप 20-25 मिनट बाद ज्वाइन करो, that is not the good thing. हाँ, so please join in time. So student, mark your attendance. डाउट है तो पूछो, otherwise you may leave the session. यस सुजल, स्क्वायर वेव एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा? ओके सुजल, स्क्वायर वेव एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा? आपको स्क्वायर वेव एम्प्लीफाई करना है स्टूडेंट, आपको स्क्वायर वेव एम्प्लीफाई करना है. ओके ओके ओके. देखिए स्टूडेंट, सुजल स्क्वायर वेव को कैसे करते हैं स्टूडेंट, लेट मी टेल यू. ओके, ओप एम्प एज एन एम्पलीफायर से स्क्वायर वेव को एम्प्लीफाई करता है. समझ आया? एंड डोंट वरी, अभी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको और दिखाता हूँ. जस्ट सेकंड, रुक जाओ आप वहां पर ही. हाँ, लुक, एक काम करता है, स्क्वायर वेव को एम्पलीफाई करना है ना, तो ये कौन सा सर्किट है जरा एक बार देख लेते हैं प्ले करके. राइट, ये एम्पलीफाई कर रहा है ना. लुक, पिक टू पिक इज हाउ मच? नहीं, 7 समथिंग लाइक. ओ, ये तो सीसी एम्पलीफायर है स्टूडेंट, तो वही का वही मिलेगा. हम एक्चुअली सीई या ऐसा कुछ चाहिए, सीई एम्पलीफायर चाहिए. गेटिंग. सो व्हाट यू डू इज
वैसे स्क्वायर वेव का टेक्निक ही पूरा अलग है, बट लेट मी सी, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए वहां पर ही। सो मुझे सी